Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is lecture number 19. The name of the paper is Morphology and Syntax. The chapter is Morphology and the topic is Other Morphological Phenomena. In Other Morphological Phenomena, we are discussing the processes primarily related with inflection. We have so far discussed two of them, internal change and suppletion. Now we'll discuss reduplication. As the name indicates here, um, the word duplication or reduplication, that it is actually the repetition of all or part of the base to which it applies. So as it is the repetition of all of the base or part of the base to which it applies, it has two kinds: full reduplication and partial reduplication. For example, and why is this done? It is done to mark or to show grammatical contrast or semantic contrast. So sometimes the meaning is changed, sometimes the grammatical function is changed. For example, if you take this full reduplication, this is the Turkish word, very similar to our Pashto word also, chabak. Now it means quickly. It is also used in Pashto, so it is easy to remember for you. And if he wants to say very quickly, he says chabak chabak. And you can see that this is a reduplication and a full reduplication. The same is the case with this word. I don't know the pronunciation, but it looks like yavas, which means slowly. Yavas will mean very slowly. Ai, which means well, and ai means very well, and so on. Then you have Indonesian words. For example, manga is used for mangoes, and manga is the example of complete reduplication, which means mangoes. So this is actually the repetition of all or part of the base. All of the base is repeated, that would be full reduplication, or part of the base is repeated, it is partial reduplication, the examples of which we'll study now. And this happens, this reduplication, for the sake of some grammatical contrast or some semantic contrast. That is, some grammatical meaning is changed or some semantic is changed, that is, the meaning is changed. The examples of partial reduplication, in which part of the base is repeated, are these words from Tagalog: takbu, which means run. This ta is repeated, ta takbu, which means will run, and you can say this is the grammatical contrast. In this case, it was also the grammatical contrast, making singular and plural with a noun, and this is with the verb. You have lakad, which means walk, and this la is repeated, la lakad, which means will walk, pili and pi pili. So you can see the example from Tagalog, which are the examples of partial reduplication, because only part of the base is repeated. This is not a very productive process in English, and not found in English much, but there are a few words. For example, we have hocus pocus, in which ocus is repeated. It means meaningless talk or activity. And then you have razzle dazzle, in which azzle is repeated, which means noisy activity or showy and exciting activity. And then you have nitty and gritty, which means the most important aspect of a subject, or the most important aspect of situation, or the most important and practical detail of a subject or situation. But this, as I said, is not very productive. But
They are very productive in other languages like Tagalog and like Turkish and other languages. So this was about reduplication. Listen to it in Urdu as well. Reduplication जैसे नाम से ज़ाहिर है, ये डुप्लीकेट करता है या पूरे बेस को या पार्शल बेस को, ताकि ग्रामेटिकल कंट्रास्ट बता सके या सेमेंटिक कंट्रास्ट बता सके, ग्रामर में चेंज हो या फिर मीनिंग में चेंज हो। तो इसकी दो किस्में, एक फुल रीडुप्लिकेशन में जिसमें पूरा बेस रीडुप्लिकेट होता है, जैसे चाबक क्विकली और चाबक वेरी क्विकली, या इंडोनेशियन वर्ड में मंगा मैंगो और मंगा मैंगोस प्लूरल। पार्शियल रीडुप्लिकेशन में सिर्फ कुछ हिस्सा बेस का रिपीट होता है। ये बेस है टकबू, तो इसके साथ ये लगता है टा रिपीट करके टा टकबू, और ये विल रन हो जाता है। और इस तरीके से और अल्फाज। इंग्लिश में ये लेस प्रोडक्टिव है, इस ज़्यादा अल्फाज इससे नहीं बनते डुप्लीकेशन रीडुप्लीकेशन से। चंद अल्फाज जो हैं उनमें एक है होकस पोकस, जिसमें ओकस रिपीट होता है और इसका मतलब है फजूल बातें। रेजल डेजल, इसका मतलब है कोई बहुत ज़्यादा शोर करने वाली एक्टिविटी, और इसमें एजल रिपीटेड है। निटी ग्रिटी में इटी रिपीटेड है, जिसका मतलब है सबसे अहम पहलू किसी सिचुएशन का या किसी सब्जेक्ट का, और ये ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है। इसकी ट्रांसलेशन भी सुन लें। ए कॉमन मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस इन सम लैंग्वेजेस, बाज़ ज़बानों में एक आम मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस है, इन्वॉल्व्स डुप्लीकेशन रीडुप्लीकेशन, जिसमें अल्फाज को दोहराया जाता है, विच मार्क्स ए ग्रामेटिकल और सेमेंटिक कंट्रास्ट। इस रीडुप्लीकेशन से पता चलता है ग्रामर कंट्रास्ट का या सेमेंटिक कंट्रास्ट का। बाय रिपीटिंग ऑल और पार्ट ऑफ द बेस, या तो बेस पूरा रिपीट होता है या उसका हिस्सा रिपीट होता है, टू विच इट अप्लाइज, जिसके साथ ये रीडुप्लीकेशन लगता है। रेपिटेशन ऑफ द इंटायर बेस यील्ड्स, अगर पूरा बेस रिपीट हो तो वो हमें देगा full reduplication, as in the data from Turkish and Indonesian given in table 4.19। तो इस टेबल में ये डेटा है, चाबक क्विकली है, चाबक वेरी क्विकली है, ये फुल रिडुप्लिकेशन है। मंगा मैंगो है, मंगा बहुत मैंगोस है। पार्शियल रिडुप्लिकेशन, in contrast partial reduplication copies only part of the base, बेस का कुछ हिस्सा इसमें रिपीट होगा। इन द डेटा फ्रॉम टैगलोग इन टेबल 4.20, ये वाला, फॉर इंस्टेंस मसलन रीडुप्लिकेशन इफेक्ट्स, रीडुप्लिकेशन असर डालता है द फर्स्ट कॉन्सोनेंट वावल, पहले कॉन्सोनेंट वावल पर, जैसे टा है तो इसको रिपीट करके टा रादर देन द इंटायर वर्ड, और पूरा वर्ड रिपीट नहीं होता। तो टकबू से टा टकबू, और लकट से ला लकट, और पीली से पी पीली। इंग्लिश में ये बहुत कम है। इंग्लिश मेक्स लिमिटेड यूज ऑफ पार्शियल रिडुप्लिकेशन इन वेरियस सेमी इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस। ये इंग्लिश जो है लिमिटेड है इस हवाले से, इसमें पार्शियल रिडुप्लिकेशन मुख्तलिफ इडियोमैटिक एक्सप्रेशन जो ईडियम के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, जो लगते हैं जो माना है वो नहीं होता, कोई और माना निकलता है, इनको इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। तो ये सेमी इडियोमैटिक है, गैर या कुछ इडियोमैटिक एक्सप्रेशन सच एज होकस पोकस, रेजल डेजल, नीटी ग्रीटी। तो इन अल्फाज में जो रेपिटेशन है वो पार्शल है, और ये बट दिस प्रोसेस डज नॉट मार्क ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन, लेकिन इसमें ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन की भी कोई बात नहीं है, चेंज नहीं है, एंड इज़ नॉट प्रोडक्टिव, और ये प्रोडक्टिव भी नहीं है। तो ये अगर आप देखें तो हमने इंटरनल चेंज कर दिया है रिलेटेड टू इन्फ्लेक्शन, प्राइमरीली प्रोसेस जो हैं उनमें सप्लीशन हो गया है, रीडुप्लिकेशन हो गया है। सो थैंक यू एंड गुड लक।